जय जगन्नाथ। आमर OSSSC नर्सिंग ऑफिसर जो सिलेबस रोची जेमती कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रोची, इमेज बेस्ड क्वेश्चन रोची, वन लाइनर क्वेश्चन रोची, एबीजी रो भी आमर क्वेश्चन आसुची, ड्रग कैलकुलेशन रो भी क्वेश्चन आसुची। एई सब पैटर्न रो क्वेश्चन आपण मानको पई डेली 9 PM रे आमर क्लास आसीबो। आज आमे डिस्कस करिबा किछि practical based questions. A 64-year-old man is admitted to the ICU with septic shock secondary to pneumonia. कौन गोटे 64 year पेशेंट एडमिट होइछि आईसीयू रे कौन थिला सेप्टिक शॉक सेकेंडरी टू pneumonia. He has received 30 ml per kg of isotonic crystalloid. से तार कौन चलछि 30 ml पर केजी रो आइसोटोनिक क्रिस्टालॉइड तार इनफ्यूज करा हेछि, बट हिज ब्लड प्रेशर रिमेन्स 78/42 एंड तार मैप केते ना 54 mmHg. लैक्टेड इज 5.6 millimole per liter. Urine output is 10 ml per hour and capillary refill is delayed. The provider prescribes a vasopressor infusion. Which nursing action is highest priority before titrating the medication? कोउटा हमर नर्सिंग एक्शन कोउटा हाईएस्ट प्रायोरिटी रहिबो मेडिकेशन स्टार्ट करिबा पूर्वरु. Insert a urinary catheter, confirm adequate IV access and continuously monitor MAP, administer IV furosemide to improve urine output, place the patient in Trendelenburg position. तो आमर ये भासोप्रेसर स्टार्ट करिया पूर्वरु हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कौन रहिबो ना कन्फर्म एडिक्वेट IV एक्सेस एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटर मैप. A postpartum woman suddenly develops heavy vaginal bleeding and boggy uterus. Blood pressure 82/46 mmHg. Heart rate 132 per minute and altered mental status. Oxytocin infusion is already running. Tara oxytocin infusion is already running. Which intervention should the nurse perform next? Prepare for immediate hysterectomy. Perform vigorous fundal massage while calling for additional uterotonic medications. Administer magnesium sulfate. Place the patient in lithotomy position only. पेशेंट रो कंडीशन कोन देला ना हेवी vaginal bleeding होची एंड बॉगी यूटेरस तार ब्लड प्रेशर केते 82/46 हार्ट रेट केते 132 एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस. ए सब कंडीशन हमरो कोन इंडिकेट करूची ना पेशेंट को पीपीएच हेची. तो पीपीएच रो हमरो नेक्स्ट इंटरवेंशन कोन रहइबो परफॉर्म vigorous fundal massage while calling for additional uterotonic medications. Prepare immediate hysterectomy टा हमर रहइबो लास्ट सर्जिकल इंटरवेंशन. एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट हमर को केस रे ना प्री एक्लाम्सिया केस रे एंड लिथोटोमी पोजीशन हमरो एटा हमरो नॉट एप्रोप्रिएट काकना पेशेंट रो हमरो ब्लीडिंग होची. एटा ब्लीडिंग हमरो लिथोटोमी पोजीशन देले ब्लीडिंग कंट्रोल हबो नाही. A patient receiving a blood transfusion develops fever, chills, flank pain, hypotension
and dark urine within 15 minutes. The patient रो blood transfusion चलतिला कौन होला patient रो ना fever हैला chills हैला flank pain hypotension and dark urine starting रो within 15 minutes रे. What is the nurse's priority action? Nurse रो priority action कौन रहिबो? Slow the infusion rate, stop transfusion immediately and maintain IV access with normal saline, administer acetaminophen and continue transfusion, obtain another blood unit. तो हमर यार प्रायोरिटी एक्शन कौन रहिबो ना stop the transfusion immediately and maintain IV access with normal saline. A mechanically ventilated patient suddenly develops absent breath sound on the right side. गोटे वेंटिलेटर पेशेंट थिला सडनली तार कौन हैला ना राइट साइड रो ब्रीथ साउंड टा एब्सेंट हैला एंड हाइपोटेंशन ट्रैकियल डेविएशन टू द लेफ्ट and oxygen saturation of 78%. What should the nurse suspect? Pulmonary edema, tension pneumothorax, atelectasis, pulmonary embolism. तार कंडीशन कौन देला ना तार राइट साइड रे ब्रीथ साउंड एब्सेंट अछि हाइपोटेंशन अछि एंड ट्रैकियल डेविएशन टू द लेफ्ट एटा हमरो कोन सस्पेक्ट करूछि ना टेंशन न्यूमोथोरैक्स. A patient receiving IV unfractionated heparin suddenly develops severe headache, confusion and unequal pupils. Which nursing action is most appropriate? कौन है गोटे पेशेंट रो हेपारिन चलतला सडनली कौन है पेशेंट रो सीवियर हेडेक है कंफ्यूजन है एंड अनइक्वल प्यूपिल्स. नर्सिंग ऑफिसर रो मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन कौन रहिबो? इंक्रीज इन्फ्यूजन रेट, स्टॉप द हेपारिन इन्फ्यूजन इमीडिएटली एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर, एडमिनिस्टर एस्पिरिन, एनकरेज एम्बुलेशन. ए जो कंडीशन हमरो दे पेशेंट रो कोन इंडिकेट करूछि ना साइन ऑफ इंट्रा क्रानियल हेमरेज जोटा कि हमरो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखा जाउछि. तो हमरो मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन कोन रहिबो ना इंक्रीज इन्फ्यूजन रेट जदि हम इंक्रीज करिबा पेशेंट को फर्दर ब्लीडिंग होबो. एडमिनिस्टर एस्पिरिन भी देले हमरो पेशेंट को फर्दर ब्लीडिंग होबो. एनकरेज एम्बुलेशन हमरो प्रायोरिटी नुहो काइना पेशेंट को ऑलरेडी सीवियर हेडेक होजी कंफ्यूजन होजी त हमें एम्बुलेशन पे एनकरेज करिबा नाही. त हमरो आंसर कोन आसीबो ना स्टॉप द हेपारिन इन्फ्यूजन इमीडिएटली एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर. A newborn delivered at 39 weeks. गोटे न्यूबॉर्न केते वीक्स रे डिलीवर हेछि ना 39 वीक्स रे. हिज हार्ट रेट केते ना 90 पर मिनिट. इरेगुलर रेस्पिरेशन with gasping, poor muscle tone and central cyanosis despite trying and stimulation. What is the priority intervention? Chest compression immediately, begin positive pressure ventilation, administer epinephrine fast, observe for 5 minutes. तमरो करेक्ट आंसर कोन रहइबो ना begin positive pressure ventilation. According to neonatal resuscitation program जेतेबेले इन्फेंट रो if heart rate less than 90 beats per minute सेतेबेले हमें कोन करबा ना start
positive pressure ventilation. If heart rate less than 60 beats per minute, start chest compression. A nurse is caring for 4 patients. Nurse कौन करुच्ची ना 4टा patient रो care करुच्ची. Which patient should be assessed first? कौ patient को से first assess करिवो. Stable angina patient requesting pain medication, COPD patient with SpO2 90% on baseline oxygen therapy, post thyroidectomy patient reporting difficult swallowing and neck tightness, diabetic patient awaiting discharge instructions. Stable angina patient requesting pain medication, এটা আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি আসিবনি. COPD patient SpO2 90% on baseline oxygen therapy. COPD কেস রে আমার নরমাল অক্সিজেন স্যাচুরেশন কেতে রইব না 88 to 92%. এটি আমার 90 আছে, নরমাল আছে. ডায়াবেটিক পেশেন্ট awaiting discharge instruction. গোটে ডায়াবেটিক পেশেন্ট ডিসচার্জ ইনস্ট্রকশন পাই ওয়েট করছে, এটা বি আমার প্রায়োরিটি নুহ. তো আমি কোউ পেশেন্ট কো ফার্স্ট অ্যাসেস করিবা না পোস্ট থাইরয়েডক্টমি পেশেন্ট রিপোর্টিং ডিফিকল্টি স্বালোইং এন্ড নেক টাইটনেস. তো এটা আমার কোন ইন্ডিকেট করুছি ডিফিকল্টি স্বালোইং এন্ড নেক টাইটনেস আমার ইন্ডিকেট করুছি আর্লি ইন্ডিকেটর অফ পোস্ট অপারেটিভ হেমারেজ. তো এটা আমার আসিব ফার্স্ট প্রায়োরিটি. A patient with chronic kidney disease has potassium 6.8 milliequivalent per liter, peaked TUFs, widened QRS complex. Which medication should the nurse expect first? गोटे सीकेडी पेशेंट आम पाखे अच्छी. पेशेंट रो पोटासियम केते ना 6.8, तार पीक्ड ट्यूएफ एंड वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अच्छी. को मेडिकेशन आमे फास्ट पेशेंट को एडमिनिस्टर करिबा? सोडियम पॉलिस्टरन सल्फेट, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ओरल फ्रुसेमाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट्स. तमरो फास्ट प्रायोरिटी कोन आसीबो ना एडमिनिस्टर आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट. आमरो फास्ट प्रायोरिटी कोन रहइबो ना स्टेबिलाइज कार्डियक सेल मेम्ब्रेन. ओरल फ्रुसेमाइड आमरो रहउची लूप डायरेटिक. एटा आमरो कोन करिवो जेहेतु ओरल रे आमरो स्लो वर्क करिवो. A patient receiving enteral feeding through a nasogastric tube suddenly develops coughing, tachypnea and oxygen desaturation during feeding. What should the nurse do first? गोटे पेशेंट रो एनजी ट्यूब फीडिंग चालुथिला, सडनली कोन हला पेशेंट रो ना coughing हला, पेशेंट रो tachypnea हला एंड ऑक्सीजन desaturation हला. नर्स कौन करिबो फास्ट? इंक्रीज द फीडिंग रेट, स्टॉप द फीडिंग इमीडिएटली एंड assess ट्यूब प्लेसमेंट, एडमिनिस्टर एन एंटीएमेटिक, फ्लश द ट्यूब विथ वाटर. तमरो फास्ट प्रायोरिटी कौन आसीबो ना स्टॉप द फीडिंग इमीडिएटली एंड assess ट्यूब प्लेसमेंट. पेशेंट रा हमरो coughing होची, टैकिपनिया होची एंड ऑक्सीजन डिसैचुरेशन होची ड्यूरिंग फीडिंग टाइम रे. एटा हमरो कोन सस्पेक्ट करिवो ना एनजी ट्यूब हैज displaced into the trachea. Increase feeding rate कले हमरो फर्दर कॉम्प्लिकेशन हबो. एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक हमरो प्रायोरिटी नुह.
फ्लश द ट्यूब विथ वाटर हमरो फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप करिवो त हमरो प्रायोरिटी एक्शन कोन रहइबो ना स्टॉप द फीडिंग इमीडिएटली एंड एसेस ट्यूब प्लेसमेंट A 58-year-old man is admitted with acute anterior wall myocardial infarction. गोटे 58 रो ओल्ड मैन एडमिट हेची कोन डायग्नोसिस तार ना acute anterior wall MI 2 hours after thrombolytic therapy the cardiac monitor shows frequent premature ventricular complex and the patient remains hemodynamically stable with blood pressure 124 by 76 mmHg. What is the nurse's best action? Prepare for immediate synchronized cardioversion. Document the finding and continue close monitoring. Administer atropine IV immediately. Stop thrombolytic therapy. ଆମର ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ କଣ ରହିବ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲୋଜ ମନିଟରିଂ ପ୍ରିପେୟାର ଫର ଇମିଡିଏଟ୍ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ କାର୍ଡିଓଭର୍ସନ ଆମେ କୋଉ କେସରେ କରିବେ ନା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ଟାକିକାର୍ଡିଆ एट्रोपिन आईवी इमिडिएटली हमरो एट्रोपिन होची एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जोटा कि हमें को केस रे यूज करूछु यूज्ड टू ट्रीट सिम्पटोमेटिक ब्राडिकार्डिया स्टॉप थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी एटा हमरो एप्रोप्रिएट एक्शन नुह not appropriate action a patient with COPD has the following ABG pH 7.36 PaCO2 58 mmHg HCO3 32 milli equivalent per liter PaO2 60 mmHg how should the nurse interpret this result uncompensated respiratory acidosis fully compensated chronic respiratory acidosis metabolic alkalosis fourth option हमरो होची partially compensated respiratory alkalosis हमरो pH केते रहउची ना 7.35 टू 7.45 एवरेज रेंज केते 7.4 7.4 रु जदी कम हैला ताले हमरो होची एसिडोसिस 7.4 रु बेसी हैले हमें कंसीडर करछु अल्कालोसिस त हमरो एठी 7.36 अछि माने एटा हमरो आसीबो एसिडोसिस देन देखिबा PaCO2 केते रहउची हमरो 35 टू 45 mmHg इठी हमरो केते देइची 58 ताले एटा हमरो कोन हला ना रेस्पिरेटरी कंडीशन एंड HCO3 देखिबा HCO3 नॉर्मल हमरो रहउची 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एठी हमरो केते देइची ना 32 जोटा कि एब्नॉर्मल त हमरो कंपनसेशन लो काम कहारो ना किडनी हमरो जतबेले कंपनसेशन करूची सेतेबेले कोन करूची ना HCO3 को रिटेन करूची एंड एसिड को वॉश आउट करूची HCO3 तला रिटेन होबो हमरो HCO3 वैल्यूटा इंक्रीज होबो एसिड वॉश आउट हेले हमरो pH टा नॉर्मल होबो त हमरो एठी केते देइची 32 माने हमर किडनी फुल्ली कंपनसेशन करूची फुल्ली कंपनसेशन करी की HCO3 लेवल ता हमरो इंक्रीज अछि एंड pH को से
नॉर्मल को नहीं आसी तो हमर एटा कोन हैला ना फुल्ली कंपनसेटेड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस A patient receiving IV vancomycin suddenly develops flushing of the face, neck, and chest with pruritus but no hypotension or wheezing. Which action should the nurse take first? गोटे पेशेंट रो कोन चलैथिले ना vancomycin इंजेक्शन चलथिला सडनली कोन होला पेशेंट रो flushing of the face, neck and chest with pruritus but पेशेंट रो कोन हाइपरटेंशन नाही कि पेशेंट रो wheezing नाही तो कोउटा हमरो फर्स्ट एक्शन रहिबो discontinue vancomycin permanently, slow the infusion rate and notify the provider, administer epinephrine immediately, continue the infusion unchanged. तो हमरो फर्स्ट एक्शन कोन रहइबो ना स्लो द इन्फ्यूजन रेट एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर discontinue vancomycin permanently and administer epinephrine immediately एटा हमरो को केस रे हबो ना जते बेले सिवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन हबो सिवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन हले हमरो कोन हबो ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस wheezing in hypotension एटी हमरो क्वेश्चन रे कोन देतिला पेशेंट रो नो हाइपोटेंशन एंड नो wheezing तो हमरो आंसर हबो स्लो द इन्फ्यूजन रेट एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर कंटिन्यू द इन्फ्यूजन अनचेंज्ड एटा हमरो कोन करिवो ना फर्दर कॉम्प्लिकेशन करिवो A nurse is caring for a patient with suspected pulmonary tuberculosis. गोटे नर्स गोटे पेशेंट रो केयर करूची जो पेशेंट रो की कोन अछि ना सस्पेक्टेड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस व्हिच एक्शन रिक्वायर्स इमीडिएट करेक्शन को एक्शन ता हमरो इमीडिएट करेक्शन करिबा दरकार wearing an N95 respirator before entering the room, keeping the room door closed, placing the patient in a negative pressure room, wearing a sterile gloves for every interaction regardless of the procedure. तमरो क्वेश्चन रे कोन पचारे छि ना व्हिच एक्शन रिक्वायर्स इमीडिएट करेक्शन तमरो आंसर कोन होबो ना wearing sterile gloves for every interaction regardless the procedure. Wearing N95 mask, keeping the room door closed, placing the negative pressure room, ये सब एक्शन हमरो required. A 3-year-old child with severe dehydration from acute diarrhea, weight 12 kg. The child is lethargic, has sunken eyes, and weak radial pulse. Which prescription should the nurse anticipate first? गोटे 3-year चाइल्ड हम पाको आसी जो पेशेंट रो की सिवियर डिहाइड्रेशन अछि एंड चाइल्ड कोन ना लेथार्जिक अछि सनकेन आईज अछि एंड तार वीक अछि रेडियल पल्स को प्रेस्क्रिप्शन हमरो कोटा को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी दबा oral rehydration solution only, rapid isotonic IV fluid resuscitation, restrict fluid until vomiting stops, administer antibiotic before fluids. oral rehydration solution only हमरो प्रायोरिटी आसीबो नाही ना काहे कि ना पेशेंट जेहेतु हमरो लेथार्जिक अछि हमें orally देले पेशेंट एस्पिरेशन रे चांस रहिबो एस्पिरेशन चांसेस and restrict fluid until vomiting stop आमे fluid stop करिबा नाही जेहेतु पेशेंट रो weak radial pulse माने पेशेंट रो हाइपोटेंशन अछि तमे fluid stop करिबा नाही administer antibiotic before fluid हमरो antibiotic एठी प्रायोरिटी ऑप्शन न हो तो फर्स्ट एक्शन हमरो कोन आसीबो ना
rapid isotonic IV fluid resuscitation. A patient with schizophrenia suddenly becomes agitated, shouting, and attempting to strike staff. Which nursing intervention is the priority? ଗୋଟେ schizophrenia patient admit ହେଇଛି ଆମ ପାଖରେ suddenly କ'ଣ ହେଲା ନା patient ହଉଛି agitated ହଉଛି, shouting କରୁଛି and attempting to strike staff. କୋଉଟା ଆମର priority intervention ରହିବ? Confront the patient regarding inappropriate behavior, maintain safety and use the least restrictive intervention first, leave the patient alone to calm down, immediately apply 4-point restraints. तो हमरो प्रायोरिटी इंटरवेंशन कौन रहिबो ना मेंटेन सेफ्टी एंड यूज लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इंटरवेंशन. During a community vaccination campaign, the refrigerator temperature is found to be 12 degrees centigrade for several hours. What should the nurse do first? Continue using all vaccines without concern. Isolate the affected vaccines. Label them, do not use, and inform the cold chain supervisor. Discard all vaccines immediately. Freeze the vaccines to restore potency. तो हमरो फास्ट प्रायोरिटी एक्शन कोन आसीबो ना isolate the affected vaccine, label them, do not use, and inform the cold chain supervisor. Continue using all vaccine without concern कोन होबो ना जेहेतु 12 डिग्री सेंटीग्रेड रे हमरो सेवरल आवर्स धरी की वैक्सीन ता रही छी तो एथरे कोन होबो ना वैक्सीन lose their potency and discard all vaccine immediately. इटा हमरो प्रायोरिटी नुहो without evaluation हमें डिस्कार्ड करि परिबा नाही. नो डिस्कार्ड. Freeze the vaccine to restore potency. Freezing cannot restore potency. A nurse conducts a study to determine whether a new pressure injury prevention control reduces hospital acquired pressure ulcers. Patients are randomly assigned to intervention and control groups. Which research design is being used? Cross-sectional study, randomized control trial, case control study, qualitative phenomenological study. यार करेक्ट आंसर कौन ना ऑप्शन बी randomized control trial. The nurse manager asks a charge nurse to assign staff for the shift. Which patient is most appropriate to delegate to an experienced licensed practical or vocational nurse? A patient admitted 30 minutes ago with chest pain. A patient 2 days after uncomplicated hip replacement requiring routine medication and dressing changes. A patient receiving the first dose of chemotherapy. A patient with diabetic ketoacidosis on an insulin infusion. तमरो करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी. A patient 2 days after uncomplicated hip replacement requiring routine medication and dressing changes. A nurse is caring for 4 patients. गोटे नर्स कोन करूची ना 4टा पेशेंट को केयर करूची. Which patient should be seen first? को पेशेंट को से फास्ट देखिबो. A post operative patient reporting pain rated 8/10 with stable vital signs.
A patient receiving magnesium sulfate who has absent deep tendon reflexes, respiratory rate 8 per minute, urine output 20 ml per hour. A diabetic patient with a blood glucose level 2110 mg per dl before lunch. A patient awaiting discharge who needs wound care teaching. तमरो फास्ट प्रायोरिटी को पेशेंट को रहइबो ना ए पेशेंट रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट हु हैज डीप टेंडन रिफ्लेक्स रेस्पिरेटरी रेट 8 पर मिनट एंड यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर तेटा हमरो कोन इंडिकेट करछ ना पेशेंट रो मैग्नीशियम सल्फेट चालतुला पेशेंट रो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होची तो एटा हमरो आसीबो फास्ट प्रायोरिटी A patient, a post-operative patient reporting pain rated 8 by 10 with stable vital sign. Pain rated pain patient रो अछि but stable vital sign हमें patient को second priority रे देखि परिबा. A patient with diabetic blood glucose level 2110 mg per dl before lunch. Diabetic patient रो 210 अछि sugar before lunch हमें patient को insulin देई कि lunch देई परिबा. एटा भी हमरो प्रायोरिटी रे आसीबो नाही ए पेशेंट अवेटिंग डिस्चार्ज हु नीड्स वुंड केयर टीचिंग त एको भी हमें लास्ट प्रायोरिटी रे रखि परिबा तमरो आंसर कोन आसीबो ना ए पेशेंट रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट हु हैज एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स रेस्पिरेटरी रेट 8 पर मिनिट एंड यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर थैंक यू समस्तंको आजिर सेशन आपण मन को केमति लागिला कमेंट सेक्शन रे कहिबे एंड डेली हमर 9 pm रे आपण मानको पई प्रायोरिटी बेस इमेज बेस वन लाइनर क्वेश्चन ए सब क्वेश्चन आसीबा आपण मानको पई